Sri Maharana was aware of the mystery behind the missing cap, so he was not clueless to the mystery. He acted smartly. So Sri Maharana को already जଣା थिला कि mystery कौन behind the missing cap, कैपटा केमती हजी थिला. So तांको पाखरे क्ल्यू थिला mystery पछरे, but से act कले smartly. So से कौन कले? It hurt to display, but then at least half a dozen caps had been procured for him. So ये situation रे कौन हैला? Situation बहुत change ही जाई थिला. Then the minister and Sri Maharana हसी हसी के वरेंडा रू बाहर थिले. So जे narrator थिले से बुझी पार नथले कि श्री महाराणा केमती कन्विंस कले मिनिस्टर को ए होल सिचुएशन विषय रे. Okay, but appeared with his head bare. Even to a boy like me, it was obvious that his bald head wore an aura of martyrdom. So martyrdom माने कौन? Martyrdom means as if शहीद ही गले जंती गोटे aura feel हुए से aura type तांकर मुंड लगुला. सो एज से बेल्ट हेडेड थे मिनिस्टर मुंडे चुट्टी नाला आ से टोपी न पिंधिकी श्री महाराणा सहित स्टेज उपरको आसते. सो तांको हेड गोटे ऑरा होल्ड करथिला जाकू मर्टियडम कहते माने शहीद हो गले जंती नंडा होइक आसन सेंती लगुला. No less than 5,000 people had gathered before the special constructed stage when the ministers ascended it. So 5,000 लोक पूरा गैदर हो जाइए से स्टेज पाखरे. That remarkable style still clings to his face. So narrator एबे भी मन रखचंदी से स्माइल को जोटा से मिनिस्टर्स दौले सेतबले. श्री महाराणा's niece, the lone high school educated girl of the area, garlanded the minister. A prolonged thunderous applause greeted the event. So कौन हैला? श्री महाराणा को नीस जे अलोन से टाइम रो हाई स्कूल एजुकेटेड गर्ल थिला से कौन जाइंकी मिनिस्टर को गार्लैंड कला. So a prolonged thunderous applause greeted the event. For the first time our people saw what they had only heard in the tales of the ancient स्वयंवरस. तो गाँ लोक माने एज इफ जो एंशिएंट टेल्स मानकर शुणी थिले जेंती स्वयंवर हुए. स्वयंवर कौन हुए? गोटे ग्रोन अप झील गोटे पुओ पिला कौन बरमाला दिए. सो विलेजर्स को पई से दृश्यटा सेंतिया थिला. ओके, अ ग्रोन अप गर्ल वाज गार्लैंडिंग अ मैन इन पब्लिक. देन द कोरस ओ माइटी मिनिस्टर वाज सung टू accompaniment of two harmoniums, a violin and a khol. तो दीटा हारमोनियम गोटे वायोलिन आ गोटे खोल साहाଯ୍ୟରେ गोटे कौन गीत गाइले मिनिस्टर को पाई. ओ माइटी मिनिस्टर दे हैड बीन टर्न्ड टू अ कीर्तन स्टाइल. तो सी गोटे कीर्तन स्टाइल रे से गीतटा को गाइले मिनिस्टर को पाई. Then it was Sri Maharana's turn to say a few words of welcome as the chairman of the reception committee. तो श्री महाराणा जेहेतु रिसेप्शन कमिटी रो चेयरमैन थिले, सो मिनिस्टर को वेलकम करिया पे तांको किछिटा वर्ड्स कहिबार थिला. आई सॉ हिम, आई वाज स्टैंडिंग जस्ट बिलो द स्टेज. सो नारेटर जे थिले जस्ट बिलो द स्टेज बहुत पाखरे से ठिया होइथिले एंड सी फर्स्ट टाइम पाएंगे देखुथिले. क्या श्री महाराणा को मूविंग हिज लेग्स एंड हैंड्स इन अ वेरी ऑकवर्ड फैशन. सो श्री महाराणा एते नर्वस हो जाइथिले से टाइम रे फेस करके एते क्राउड को से निज हैंड्स और लेग्स को गोटे ऑकवर्ड मोशन रे हलौथिले. सर्टेनली दैट वाज नर्वसनेस. सो नारेटर जानी परथिले कि से नर्वसनेस रो ये सब काम गुरा करचंती. बट विथ अ successful exercise of willpower, he grabbed the glittering mic and managed to speak for nearly an hour, giving a chronicle account of Babu Virukisho's achievement and conveying gratitude on behalf of the nation to the departed soul of the minister's parents. But then it was Sri Maharana's turn to say a few words of welcome as the chairman of the reception committee. As Sri Maharana reception committee रो chairman थिले तो तांकू मिनिस्टर को वेलकम करिया पे किछटा वर्ड्स कहिबार थिला. I saw
I was standing just below the stage. So narrator जी थे just below the stage माने stage रो बहुत पाखरे ठिया ही So से first time देखिले श्री महाराणा को speech दबार and Sri Maharana was moving his legs and hands in very awkward fashion. Certainly that was nervousness. So जेहेतु श्री महाराणा नर्वस हो जाइथिले सेइथपई सीए निज हैंड्स और लेग्स को गोटे ऑकवर्ड मैनर रे मूव करथिले बट विथ अ सक्सेसफुल एक्सरसाइज ऑफ विल पावर से निजर विल पावर को एकाठी करिकी करेज को एकाठी करी कोन कले माइक धरिले एंड वाज एबल टू स्पीक फॉर ओवर एन आवर से बहुत साहसर सहित माइक धरिकी गोटे घंटा पई स्पीच देथिले बट विथ अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस ऑफ विल पावर ही ग्रैब्ड द glittering mic and managed to speak for nearly an hour, giving a chronological account of Babu Veer Kishore's achievement and conveying gratitude. तो सी कौन क्या विषय कथा है बाबू वीर किशोर को अचीवमेंट्स विषय कथा है तापरे ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन विषय किसी स्पीच कहले देन डिपार्टेड सोल ऑफ मिनिस्टर्स पेरेंट्स से मिनिस्टर को पेरेंट्स मानू को भी संबोधित कले बहुत किसी गुड वर्ड्स कहले बट for whom the world had been without the minister. So से chronological order रे minister को बाबा माँ nation से सब विषय रे speech देले. I was happy that Sri Maharana did well in main speech. So narrator happy थिले कि श्री महाराणा एते भलो speech देले. But the greatest surprise was yet to come. हेले surprise टा अबिका आसिया पे जाउथला. In the concluding observation of Sri Maharana. Okay. Well, many would take Sri Maharana as a pakka politician, but I can swear that it was out of his goodness, a goodness unbalanced by excitement. That shows Sri Maharana uttered the lie. So कौन से जेमिति स्पीच देले गोटे लोक श्री महाराणा को पूरा पक्का पॉलिटिशियन भलिया ही भाभी नब बट नारेटर कौन कहले नारेटर कहले मु स्वेयर करूची ये पक्का पॉलिटिशियन भलिया स्पीच देले बट ये सेमती नुहे केमतिया बिकॉज ही गेव द स्पीच बिकॉज ऑल ऑफ हिज गुडनेस एंड ही वॉज सो गुड एंड बट ही वॉज अनबैलेंस्ड बाय एक्साइटमेंट से बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाइथिले एंड से जहाँ पारे ता कही देइथिले स्पीच रे सो श्री महाराणा अटर्ड द लाई तो श्री महाराणा गोटे मिछ भी कही ही सेड हिज वॉइस रेज्ड इन अ क्रिसेंडो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स माने सुनी थिबो मिस्ट्रियस डिसअपियरेंस माने हठात डिसअपियरेंस हे जाइथिला मिनिस्टर कर कैप यू थिंक द प्रॉपर्टी इज स्टोलन डोंट यू तो तुम मैंने भावुच से प्रॉपर्टीटा को किए चोरई की नहीं जाइए naturally but not so ladies and gentlemen not so से कौन कहले एमिति नुहे ladies and gentlemen एमिति नुहे एमिति किछि भी हेनी श्री महाराणा smiled mysteriously so सी mysterious smile गोटे देगी कहले the minister nodded his big clean head with glowed like a satellite so narrator कौन कहते से गोटे mysterious smile दे श्री महाराणा गोटे mysterious smile देकी बाबू वीर किशोर को आड़ को चाहिए एंड बाबू वीर किशोर कौन निजर क्लीन बाल्ड शेप्ड हेड को हलेले जोटा सैटेलाइट भलिया देखा जाउतला अकॉर्डिंग टू द नैरेटिव देन श्री महाराणा रिज्यूम्ड यू ऑल आर डाइंग टू नो व्हाट हैपेंड टू द कैप सो कौन कहले ऑडियंस को यू ऑल आर डाइंग तुम मैंने जानिया पे निश्चिंत चाहूथिबो कि कैप को कौन हैला इजंट दैट सो से नुहे कि येस येस नेचुरली यू आर डाइंग हाँ हाँ तुम्हें जानिया पे चाहूथिबो वेल इट इज लाइक दिस अ सर्टन नोबल मैन ऑफ आवर एरिया हैज टेकन इट अवे व्हाई वेल टू प्रिजर्व इट एज अ सैक्रेड मेमेंटो तो से कौन कहला से कहले कि आम एरिया गोटे भद्र लोक कैपटा को मिनिस्टर नहीं जाइचंती कहीं नहीं जाइचंती सी एज अ सैक्रेड मेमेंटो म्यूजियम रे रखिया से टोपी को नहीं जाइचंती एज अ रिमेम्बरेंस आमे जेंती मिनिस्टर को भूली न पारू तांको टोपी देखिकी सब मन पकाउथिबा से टोपीटा को नहीं जाइचंती ओके ही वाज ऑब्लिगेट टू टेक इट
away secretly, because otherwise the honorable ministers of the fisheries and finance, who is burning example of humility, would never have permitted our friends the nobleman to view the cap as anything sacred. So श्री महाराणा ये कौन कहले, से भद्र लोकटी जो जी आम एरिया को बिलोंग कर सी सिक्रेटली मिनिस्टर को टोपी को नहीं जाइए, बिकॉज सी एज अ मेमेंटो स्टोर करने चाहूँगी, मिनिस्टर को किसी जिनस को एज अ मेमेंटो स्टोर करने चाहूँगी। एंड से डायरेक्टली पचार मिनिस्टर को, मिनिस्टर एते हम्बल पर्सन सी दे न थांते, सो फॉर दैट रीजन सी सिक्रेटली टोपी को तांको न कहीकि नहीं जाइए। श्री महाराणा स्टॉप्ड एंड brought out of his pocket a handkerchief full of coins, and holding it before the audience said, "Well, ladies and gentlemen, our friend the nobleman has requested me to place this humble amount of 101 rupees at the disposal of the honorable ministers for some little use in his blessed life mission, the service of the people through fish and fine arts." So Shri Maharana कौन कले ना, in front of the peoples, in front of the audience and the ministers, से कौन कले निज पॉकेट भितर हाथ पुरे की गोटे हैंकरचिप बाहर कले which was full of coins, and he said that कि जो भद्र लोक जनक थिले सीए 101 रुपीज देइछंती एंड कहिछंती कि मिनिस्टर को दबा पई, जोटा कि सी लोक मानकर हित पई यूज करिवे इन फिश एंड फाइन आर्ट्स। ओके, बट एक्चुअल रे कौन होता, झंडो टोपी चोरी करथिला एंड सी टोपी को लेकिन ग्रुप्स भितर को पड़ेला। नेक्स्ट पैराग्राफ, श्री महाराणा बाउड एंड हैंडेड ओवर द मनी टू द मिनिस्टर, who, which was most graceful gesture, accepted it. Applause and words of wonder and appreciation broke out like a hurricane. Even the minister and Sri Maharana clapped their hands. Then, of course, the minister spoke for 2.5 hours, drinking a glass of milk in between, at the end of which he declared that as a mark of respect to the unknown admirer of his, he decided to remain bareheaded for the whole night, although the good earth did not lack for caps, and in fact a surge of caps had already tied to crown his undaunted head. So in this paragraph कौन है ना, श्री महाराणा से पैसाटा कौन हैंड ओवर करदेले मिनिस्टर को, एंड अ लार्ज राउंड ऑफ अप्लॉज वाज स्प्रेड ऑल ओवर दैट एरिया। लोक मैंने जेतिक सब ठिया होते बहुत जोरे क्लैप कले, एंड मजा कथा कौन ना, श्री महाराणा आउ मिनिस्टर दी जण भी क्लैप करुथिले मिसिकी। देन आफ्टर दैट द मिनिस्टर केम टू गिव हिज स्पीच, एंड ही स्पोक फॉर ओवर 2.5 hours, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। एंड से कौन कहले कि सीए बेयर हेडेड रहिबे, माने टोपी न पिंधिकी रहिबे एज अ रेस्पेक्ट, माने कौन एज अ रेस्पेक्ट टू दैट नोबल पर्सन, से कौन करिवे से टोपी न पिंधिकी फॉर अ होल नाइट रहिबे। ऑल्दो द अर्थ इज नॉट, द अर्थ हैज़ नो लैक ऑफ कैप्स, ऑल्दो तांको पाई कि कैप्स रेडी होइकी रहिछि एंड तांको किछि कैप्स रो कमी नाही, बट एज अ रेस्पेक्ट टू द नोबल पर्सन सी सेंती बेयर हेड होइकी रहिबे। Soon my shock gave me a double-edged feeling for Sri Maharana, an appreciation for his presence of mind and a sadness for his having to send 101 rupees to cover Jhando the monkey's mischief. So कौन narrator बहुत दुखी हो जाइथिले to see the double-edged feeling for Sri Maharana। तांको दी प्रकार फीलिंग होतला श्री महाराणा पाइंकी। फर्स्ट फीलिंग ही वाज वेरी हैप्पी फॉर श्री महाराणा कि सी एते प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिकी जिनस को हैंडल करदेले, एंड सेकेंड से झंडूर मिस्टेक पाई कि 101 रुपीज देले। दैट नाइट ऑल द रेस्पेक्टेबल पीपल्स ऑफ द एरिया partook of the dinner that the reception committee threw in honor of the minister. Glance of awe and esteem was
frequently cast at the minister's head and homage paid to the honorable. But when I saw Sri Maharana in the morning, I could immediately read in his eyes the guilt that haunted him. At least whether he saw me, Sri Maharana perhaps had never uttered a lie. सो श्री महाराणा को कहीं दुख होता कहीं गिल्ट फिल होता कि आज पूर्वर केबे हेले भी श्री महाराणा मिछ कही नथिले एंड से स्टेज उपर एते लोकों सामने बहुत बड़ मिछ कही देथिले बट व्हेन एट लास्ट ही अटर्ड ही डिड सो बिफोर थाउजेंड ऑफ पीपल्स से केबे भी मिछ कहती ना आ जेबे से मिछ कहले से थाउजेंड ऑफ पीपल को सामने मिछ कहले गॉड अपार्ट एट लास्ट देयर वाज one creature, that is myself, who knew that he was no longer a man of truth. सबु लोकों को छाड़ीदेले केवल मु ही जानी सी आउ सत कहला वाला पर्सन नहांती सी भी मिछुआ हो सारे. Minister however looked extremely delighted. He did not seem to notice with what consistent Sri Maharana was conducting himself before him. सो मिनिस्टर किंतु बहुत खुशी थिले सी जानी नथिले कि श्री महाराणा कौन कर. Success of the story lies in the suspense of and surprise. At last came the moment of the minister's departure. He was served with a glass of sweetened curd in his cabin. While sipping it slowly, he said in voice choked with curd and emotion, "Well, Maharana, haha. The way things are moving, haha. I am afraid, haha. People would start snatching away my clothes, haha. And haha, may have to go about, haha, naked, haha, ha. But I don't mind, haha. That is the price of love, haha, ha." So in this paragraph is a description of the conversation between Sri Maharana and बाबू वीर किशोर. सो ये पैराग्राफ रे कौन है ना जिते लास्ट टाइम आते मिनिस्टर तांकर प्लेस को जीवाई जाऊे. सो कौन है ना श्री महाराणा कि वन ग्लास ऑफ स्वीट एंड कर्ड आनी पीवाई कैबिन को लेकिन जाइए. सो एट दैट टाइम when he was zipping the curd slowly, when the minister was zipping the curd slowly, so with a choked voice मैंने कौन कर्डटा मुहरे अच्छी and he was trying to speak something with emotion. So बाबू वीर किशोर कौन कही महाराणा जेमिति जिनस चलुची ए किछि दिन हैला मते डर लगुच कि इन अ सेंस ऑफ कॉमेडी से कही कि मते डर लगुच कि लोक मैंने मो क्लॉथेस मु जोटा वियर करुची मु क्लॉथेस भी नहीं जिवे आ मते नेकेड ही जीवाई पड़ो मो घर को. सो बट आई नेवर माइंड दिस इज द प्राइस ऑफ देयर लव टुवर्ड्स मी according to the minister. Minister finished his curd and came out near the veranda facing the pond and the groves. So the minister कौन कले सी जिते कर्डटा को पीवा सारदे से वरेंडा को आसिले which was facing towards the pond and the groves to wash his mouth. तो श्री महाराणा followed him with water in a mug. So सी मुह धोयापी आसिले towards the veranda which was facing towards the pond and the groove. तापरे श्री महाराणा कौन कले पानी मगरे नहीं कि पछे पछे जाऊले. देयर वॉज नोबडी इन द वरेंडा एक्सेप्ट मी. माय प्रेजेंस वॉज नॉट एक्सीडेंटल. सो नारेटर को छाड़ी कि से एरिया रे आउ कहीं नथिले एंड नारेटर को प्रेजेंस से क्या सरप्राइज भी करू नथला बिकॉज ही वॉज यूजुअल आउ सी तांकर अंकल मैटर्नल अंकल को हाउस थिला. सो से सब बेले श्री महाराणा घरे बुलुथिले. सो देयर वॉज नोबडी इन द वरेंडा एक्सेप्ट मी. A few minutes before, I was observed that the rascal Jhando was playing with the minister's cap was slowly approaching the veranda. तो मु कौन देखिली से वेरेंडा रे झंडो कौन करुची मिनिस्टर को कैप सहित खेली खेली की वेरेंडा आड़ को आसुची. Slowly had I wished for anything so ardently as I wished then for Jhando to go unnoticed by the minister. So
narrator पूरा wish करथिले कि झंडो जिंदी मिनिस्टर को न देखा. He was a monkey not in a figurative sense but a real little monkey. When he was an infant, his mother had taken shelter inside Sri Maharana's house in order to save her male child from the usual wrath of his father. सो कौन होता ना जितेबले झंडो इनफैंट थिला माने झंडो गोटे छोट मंकी थिला. सो ता माँ ताकू नेकी पलि आसला क्या घर को श्री महाराणा घर को एज सी मेल चाइल्ड थिला आउ ता माने फादर माने मेल मंकी जे थिला बहुत रागी थिला आउ ताको मारदवा पई चाहुथला. ओके सो हर मदर मंकी टुक शेल्टर इनसाइड श्री महाराणा's हाउस टू सेव her baby. Sri Maharana had not been at the house and his servant killed the mother monkey. तो जेतबेले श्री महाराणा घरे नथिले आ मदर मंकी शेल्टर नबा पे आसथिला एक्सीडेंटली कौन होइथिला ना डरी की सर्वेंट्स माने त मदर मंकी की मारी देइथिले झंडोर माँ को मारी देइथिले. श्री महाराणा became extremely sad and did not eat for 1.5 days. सो श्री महाराणा यही जिनस को शुणिकी 1.5 days खाइबा छाड़ देइथिले. से बहुत सरोरे थिले. टू कंपेनसेट फॉर द रॉन्ग डन तो सी जेहेतु भूल करी नथिले बट भूल तो हेइछि ना तो ताको कंपेनसेट करिया पई से कौन बेबी मंकी को नर्चर कर देइथिले माने निज पाखे रखी देइथिले एंड क्रिश्चियन एट झंडो आउ ता ना देइथिले झंडो विथ ग्रेट अफेक्शन. तो सी बहुत लव एंड अफेक्शन रे ताको पाली थिले. आफ्टर झंडो हैड ग्रोन अप अ लिटिल ही ऑफन एस्केप्स इनटू ग्रुप्स. तो जेतेबेले झंडो टिके बड़ हो गला तो सी तार ग्रुप्स को पलाए. ही वाज हाफ डोमेस्टिक एंड हाफ वाइल्ड. से हाफ डोमेस्टिक और हाफ वाइल्ड. ही प्लेड विथ एवरीबडी एंड एवरीबडी टॉलरेटेड हिम. सो से समस्त सहित विलेज रे खेले और समस्ते ताको टॉलरेट भी करती. वी चिल्ड्रेन वेयर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम. तो आम चिल्ड्रेन माने ता सहित बहुत मिसु और ता सहित बहुत खेलु अकॉर्डिंग टू द नैरेटर. Then to my horror I saw झंडो rushing towards us from the other side of the pond. तो पॉन्ड आरपट साइड रु मु देखिली झंडो आम आड़ को दौड़ी आसुची. I made an effort to warn श्री महाराणा but in vain. मु निज पूरा एफर्ट लगाउथली नैरेटर कहउछंती श्री महाराणा को वार्न करिया पई कि झंडो अछि बट से सब नष्ट गला. झंडो गॉट देयर इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. सो से जेहेतु मांकड़ से पूरा डेई डेई के जल्दी पहुँची गला. ही सैट डाउन बिटवीन द मिनिस्टर एंड श्री महाराणा. तो मिनिस्टर और श्री महाराणा दी जन आमना सामना ही बसते. झंडो कौन गला डेई डेई के जाई तांको मझिरे बस पड़ा. ही पुट द कैप वंस ऑन हिज ओन हेड. सो सीए मिनिस्टर को कैप को आगे निज मुंडरे पिंधिला एंड देन टेकिंग इट ऑफ तापरे काढ़ी देकी ऑफर्ड it to the minister with a very genuine gesture. So गोटे genuine gesture रे सी मिनिस्टर को तांकरी कैपटा ऑफर कला. My heartbeat was trembled. Looking at Sri Maharana, I saw an extremely pitiable image, pale as dead. So श्री महाराणा को मु सेतबेले देखुथिली मो हार्ट भी माने नैरेटर कहउछन तांको हार्ट भी टेरिबली धक धक करूथिला एंड से बहुत डरिकी थिले. श्री महाराणा को देखिया को गले तांको मुह एमती हो जाइला एज इफ नेक्स्ट सेकेंड से मरीजे. से बहुत दिजन डर जाइले. द सरप्राइज्ड मिनिस्टर मबल्ड आउट अरे अरे isn't this one the very cap taken away by the nobleman. अरे अरे ये कौन से कैप जोटा से नोबलमैन नहीं की जाइथिले. एंड समथिंग मोस्ट फैंटास्टिक केम आउट ऑफ द ड्राई लिप्स ऑफ श्री महाराणा. और श्री महाराणा थरी थरी की निज ड्राई लिप्स रु कौन अटर कले. seemed to be the verge of collapsing as if से collapse कर जिवे सेंती कहउतले. yes this is the nobleman. so से कौन कहउतले डरी डरी की थरी की श्री महाराणा कहले हाँ ये ही से nobleman. his eyes bulging out the minister managed to say. so minister को आखि पूरा बड़ बड़ हो गला and he managed to say what did you say. well तो से कौन कहले अरे तू कौन कहूचु ये. बट श्री महाराणा वॉज नो लॉन्गर इन हिज पोजिशन टू से एनीथिंग. श्री महाराणा किंतु किसी कही ही पार नथिले. से एते डरिकी थरुथिले.
he broke into tears. Next second, Shri Maharana kandiya pe lagile minister ko agare. Next moment, I saw the honorable ministers of fisheries and fine arts weeping too. Next moment, re mu minister ko bhi kandiya pe dekhi. PA's voice was heard from the opposite veranda. Sir, the zip is ready. So PA next veranda ru आवाज देले मिनिस्टर को, सर आपण को जीप रेडी हो जाए. द मिनिस्टर गल्प द मग फुल ऑफ वाटर एंड वॉक टुवर्ड्स द जीप. तो मिनिस्टर कौन कले, से जो मगे पानी से धरी थे से ताको पी देले आउ जीप आड़ को चले. श्री महाराणा फॉलोड हिम. श्री महाराणा तांको पछे पछे जाउथले. दिस रेडेंट आई एंड ड्रॉन फेस वाज इंटरप्रिटेड एज अ मार्क ऑफ सॉरो ऑफ सेपरेशन. सो से दी जण एमितिया मुह करथिले एज इफ रेड आईज हितला, ड्राउन फेस ही जाइतला, एज इफ इट वाज द सिंबल ऑफ देयर सेपरेशन ऑफ श्री महाराणा एंड बाबू वीर किशोर. महाराणा's politics endeavor is not known to have gone any further. So आ परे श्री महाराणा पॉलिटिक्स रे केबे भी देखा गलेनी. ओके, and it is strange that the honorable minister Babu Veer Kishore, who was willing to be robed his cloth, was soon completely forgotten in politics. सो आपर बाबू वीर किशोर भी जे मिनिस्टर थिले एंड वाज विलिंग, सी एते लोकप्रिय थिले कि एज इफ लोक मैंने तांको ड्रेस भी नहीं जिवे. सो सी भी आउ पॉलिटिक्स रे देखा गलेनी. हिज नेम वाज इरेज्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स. आई स्ट्रांगली फील दैट इट वाज इन दिस एपिसोड ऑफ द कैप that changed the course of life. So narrator कौन फील कले, narrator फील करे कि ये जो कैप एपिसोड टा थिला दी जन को लाइफ रे, से कैप एपिसोड ही चेंज करदेला दी जन को कोर्स ऑफ लाइफ और मोटिव ऑफ लाइफ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे अहेड. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.